We अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर, या प्लीज तो वो पुट द बोले या हाउस तो इन मैं ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म इसको करो, बंद कीजिए, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। Why do our examination paper leaks with such Sir, remarkable one second. consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए। नहीं नहीं, आप इनको पहले बिठाइए। बैठिए। नहीं, आप आप इनको बैठिए। बिठाइए। नहीं, आप इनको बिठाइए। आप बिठाइए इनको। इनको हंगामा करना है तो हंगामा करिए। सर यही नहीं चाहते हैं सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो भक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, यू विल सीट। सर वहाँ से भी Don't दूसरे ट्रेजरी बेंचेस पे जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा opposition रहा से है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग प्लीज बी चिल्लाए। सीटेड, आप बैठिए सब लोग। सर मैं बैठाओ, He is disturbing continuously. डोंट डिस्टर्ब द they don't स्पीकर want the प्लीज, discussion. डोंट डिस्टर्ब द The स्पीकर। treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. नो, यू आर नॉट अलाउड No, टू sir, स्पीक। you tell them no. why No. not? If No they can mercy. see from there, This type of behavior you not cannot good. silence and stifle the voice of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member of this house, Please be every seated. member of this house has to be treated equally. Please be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party Yeah. we अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर, या प्लीज तो वो पुट द बोले या हाउस तो इन मैं ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। सरसा। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म इसको करो, बंद कीजिए, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। Sir, every student बैठो, deserves बैठो, the Sir, every student deserves बैठिए, बैठाइए इसको, बैठाइए। सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, सर चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है, सर बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that millions of students have lost. That is the question before this August House today, sir. But let me also say this. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, after the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not done by headlines.
governance is measured by outcomes. So what is the outcome? So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. So the BJP government calls itself a government of New India. Sir, young India today asked only one question. If this is New India, why do our examination paper leaks with such Sir, one remarkable second. consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए नहीं आप इनको पहले बिठाइए बैठिए नहीं आप इनको आप बिठाइए बैठिए। नहीं आप इनको बिठाइए आप बिठाइए इनको इनको हंगामा करना है तो हंगामा करें। सर यही नहीं चाहते हैं सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो वक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड। नवाजी प्लीज बी सीटेड। यू विल सीट। सर वहां से भी Don't दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा opposition रहा से है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग प्लीज बी चिल्लाए। सीटेड। आप बैठिए सब। सर मैं बैठो। He is disturbing continuously. डोंट डिस्टर्ब द they don't स्पीकर want the प्लीज। discussion. डोंट डिस्टर्ब द The स्पीकर। treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. नो यू आर नॉट अलाउड No, टू sir, स्पीक। you tell them no. Why No. not? If No, they can Mamaji. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and stifle the voice of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member of this house, Please be every seated. member of this house has to be treated Please equally. be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, if this new India, sir, if this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, the government promises a new system. Every year, students get the same old scandal. The names of examinations change. The names of victims change. The names of accused change. But somehow, the crime and the government never changes. Sir, every time there is a paper leak, the government reacts as if they were seen as an unforeseen act of God, as though lightning has struck out of a clear sky. But that's not reality, sir. This is not lightning, because lightning strikes once. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।